Hello everyone, good evening. Can you all hear me and can you all see me? Good evening. Good evening everybody. Oh lovely, yes you can. कैसे हो बच्चों? I hope you're doing well. Good evening. Mitosis खत्म हो गया. आज हम करेंगे meiosis and this chapter is going to be over and then tomorrow we're trying to do MCQs on this particular chapter. What say? Good evening. Good to see you. Any doubts in mitosis? I hope it's crystal clear. Everything in mitosis is 100% clear to you. बताइए. Yes or no? Good evening, everybody. Good to see you. This is Dr. Vani and welcome to Vedantu BioTonic, India's truly most trusted and most loved bio channel. Good evening. Clear हो गुण? सब बच्चों को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज में क्या होता है बताओ गुण, जग्गू बताओ. प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगती है, क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, मेटाफेज में इक्वेटर पे अटैक होते हैं, मेटाफेज प्लेट बनता है, एनाफेज में सेपरेशन शुरू होता है, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, right? And I also told you this is karyokinesis. I also told you the difference of cytokinesis between plant cells and animal cells, and finally reappearance, right? Chromosomes से दोबारा chromatin fiber बनना, reappearance of the Golgi apparatus, reappearance of the endoplasmic reticulum, reappearance of the nuclear membrane happens in telophase. Is that clear? Right? Good evening. Well, is that clear? Tomorrow can I take an MCQ test in this in today's class? This is lecture 2 of cell cycle. Can we do meiosis? मैंने कल आपको दो वर्ड्स बताए थे. नेहा, रौनक, were you there in my class yesterday? I talked about two words. कौन से दो वर्ड्स थे? एक था इक्वेशनल डिवीजन. अरे वाह सल्तनत, you are brilliant. So one word was equational division and the other word was reductional division. Do you remember this? Right? Equational division was mitosis because 2n से 2n हो रहा है. मैंने आपको कल बताया था that the content is going to double but the number of chromosomes is going to remain the same. So content can become 2c to 4c but the number of chromosomes will remain the same. So yesterday when we studied mitosis, we studied equational division, and today when we are going to study meiosis, we are going to study reductional division. आशीष, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रही हूँ बेटा. आशीष, अभिषेक, जो भी आपका नाम है बेटा. Right, everybody. Reductional का मतलब क्या है? Reduce. That means it's going to reduce. What is going to reduce? Tell me what is going to reduce. बताओ बेटा. बताओ. What is going to reduce? Tell me. What is going to reduce? Tell. The number of. What is going to reduce? Tell. Number of chromosomes. That means from 46 it's going to become half the number of chromosomes. From 2n it's going to become n. Yes or no, Homna? The ploidy level is going to be from diploid to haploid. Yes, everybody? Yes? Perfect. So can we start doing that today, Princey? Can we start doing this, everybody? Yes, ma'am. Perfect. चले आगे. Yes, from 2n, from diploid number of chromosomes, it's suddenly going to become haploid number of chromosomes. That means from 2n, it's going to become n. Okay, and let's move forward. NEET 2023 CBSE Term 2 cell cycle. Let's pick up the remote. Here it is. Okay, चलिए. And guys, Instagram पे अगर आपको कोई doubts है, कोई problems है, you can always follow me there. I actually look at all your stories. You can do it on Instagram. You can look it on Telegram. By the way, I'm also trying to form a community on Discord. आप में से कितने बच्चे जो Discord use करते हैं so that we can probably, you can be there. Hi, Aisha Khatun. Good evening. And how many of you are brand new students? अगर आप में से anybody who uses Discord, do tell me in the comment section. How is it? Is it better than Telegram so that we can get in touch with each other? Otherwise, we will form the same on Telegram. Alright, so this is the app, Vani for Vedantu on Instagram, on Telegram. Did you go get the book? Yes, go get the book because 40% of questions come from class 11th, all chapters of class 11th, human physiology, plant physiology. मैं कल एक टेस्ट भी लेने वाली हूँ आपका प्लांट फिजियोलॉजी पे. Yes, it's good. खुशी आपने मैं used it. Let me see. First live session. अरे वाह खातून, super amazing. तो get this book and solve your entire 11th when you're in class 11th. 11th और 12th के सारे questions है, complete 11th and complete 12th. 9 o'clock we are going to meet again and going to do microbes. Make sure that you're liking, sharing, subscribing. Done? Cool. चले आगे.
आज खत्म कर दे meiosis, fast, done. Now just look at this diagram before I move forward. Just simply look at this diagram. Let us say, now there are two things that you have to observe in this diagram. Deep G, Neha G, Aisha G, Isha G. You have to look at this diagram. You have got to tell me two things which are happening in this diagram. Before we move forward, Kirthana, that's such a lovely name, Kirthana. Are you from Karnataka? Please pay attention and let's look at this diagram. Do you see this? So can you see this? आपको यहाँ पर in the blue color and red color, do you see any mixing? Akku ji, Princey ji, do you see any mixing there? No. Right? These are the parental gametes. You're not seeing any mixing. Is anybody seeing any mixing there? Blue में red mixed है, red में blue mixed है. ऐसा कुछ नहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा. Right? Now, first and the most important thing is, can you see that there are two blues and two reds? First set, tell me. Pehli cheez. Can you see in one there are two blues and two reds? These are the daughter nuclei. How many blue and red per cell? Is there one blue and one red per cell, or is there anybody who can say I can see two blues and two reds? That means from two pairs or 2n, the daughter cell will have only n, one of them. That means there is reduction which is happening. Can you all see that? Dipanshi, Harshita, can you all appreciate that? Let's not focus on mixing right now. Ronak, let us just focus on the pairs. You see two pairs of red and you see two pairs of blue, but eventually in these four, is there anybody who can say I can see two pairs of red? No. That means reduction division is happening when it is meiosis. Now the second important thing that you have to remember is, and that is the opening paragraph of genetics also, that we are similar to our parents but we are not identical. If you ever look at my parents, someday, my nose is exactly like my father. Maybe my forehead is also exactly like my father, but my eyes are on my mother. So maybe this part, my chin, and this part is on my mother. My eyes are on my mother. My mother's got big eyes. So my eyes and my chin part is on my mother, and maybe the middle part of my face is on my mother. My father often, my grandmother is no more. And my father often looks at my hands and he takes my hands in his hand and says, you've got my mother's hand. Right? So my father tells me that you've got my mother's hands. That means he often tells me that my hands are exactly like my paternal grandmother, my dadi. Right? But this part, this part is exactly like her mother. We've got a retrogressive chin. Our chin is behind. Right? It's not a forward chin. So that's come from my maternal grandmother. Right, everybody? So what I'm trying to say is that there is always mixing of genes. A certain part of genes comes from mother, a certain part of genes comes from father, and then they get mixed, and some of them are dominant and some of them are recessive. Like my grandmom had light eyes. She'd got greenish, grayish eyes. But I don't have, it could be recessive in me. I'm trying to get, my hair is like my father, he's got very curly hair, right? In the comment section, tell me what part of your face resembles your parents. Tell me, I would love to read it. What part of it is like your grandfather? So this, can you see the second thing which I want to tell you is this mixing which has happened. Let us say this is maternal mother. Let us say this is paternal father. M for maternal mother. P for papa, paternal father. Right? And can you see this crossing over has happened, which is something which I'm going to teach you in a lot of detail. I will do one complete session from NEET point of view on crossing over. Is it, Jagu? You resemble your father completely? Perfect. Forehead father and I'm like my father, Astuti. Okay, nice, nice. Neha, eye kiske jaisi? वो तो लिखा ही नहीं है. Yes, is it Dipanshu? You look like your mother. Your eyes are like your mother, Bhumika. Perfect. So this is exactly what I'm saying. There is crossing over. You have certain characters from your father. You have certain characters from your mother, and they've got mixed up. This is what happens. Does it have to happen in the body cells? No. It has to happen in the gametes. Yes or no, it has to happen in the gametes. There is a mixing. This mixing is called crossing over, which is a major function of meiosis. Right, Isha? Right, Gaurav?
I will do that particular chapter गौरव, आप तब तक मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, मैंने फोटोसिंथेसिस 5-6 बार करवाया हुआ इस चैनल पे. It only happens in the gametes. So it's a type of cell division that reduces, very important MCQ, the number of chromosomes from 2n to n, and it results in haploid daughter cells. These haploid cells are the gametes because the body cells are diploid. So these haploid cells have to be the gametes. Am I clear, everybody? Is that clear, Astuti? Is that clear, Isha, Ronak, Ananya, Sunidhi? It occurs in the diploid germ cells. So it will occur in the cells of the ovary. It will occur in the cells of the testis. The ovary will produce egg. So when the cells of the ovary will undergo meiosis from 2n to n, the testis will undergo meiosis to produce sperms. It leads to haploid phase. So the egg and the sperm will be haploid for sexual reproduction. And when n plus n will meet, it will again be 2n. So restoration, because अगर आप gametes को 2n बना देते हो ना, so अगर 2n और 2n मिलते तो 4n होता. So that is not right. Is that clear? Yes, there is a quiz tomorrow on this particular chapter. Did you understand? So that is why you need to make it n and n, because when n and n is going to meet, that is going to be 2n and it's going to restore the chromosome number. Am I correct? Am I understood? Write to you on the chat section please and say, yes ma'am, we got your point. Did you understand, everybody? Yes? Am I clear? Am I understood? Right, everybody? Perfect. Can we move forward? All right. That's meiosis. Meiosis consists of two cell divisions. So there is meiosis 1 and there is meiosis 2. Now this is a very important point. Let us try and understand this, Sneha. This is a very important point. देखो बेटा, अगर आपने reduction कर दिया, meiosis 1 में reduction कर दिया, बस 2 मिनट लगेंगे इसको समझ के जाना सारे बच्चे. तो मतलब अगर आपने 2n से n बना दिया, और अगर इसको रिडक्शन कह सकते हैं ना, 2n से n बना दिया, 1n रिड्यूस कर दिया, 2n से 1n कर दिया. बेटा अगर इसको भी रिड्यूस कर दोगे, 1n का दोबारा रिडक्शन कर दोगे, तो वो कितना बन जाएगा? हाफ n. बट डू यू वांट n और डू यू वांट हाफ n? बिकॉज n दैट मींस 1n प्लस 1n विल गिव यू 2n. और अगर आप हाफ n प्लस हाफ n को जोड़ोगे बेटा, फिर तो आपको सिर्फ 1n मिलेगा. यू डोंट वांट 1n. रॉन्ग. इसीलिए बेटा अगर आपने एक बार रिडक्शन कर दिया है तो सेकंड डिवीजन तो आपको इक्वेशनल करना ही पड़ेगा. यस और नो? सो ओनली वंस कैन यू रिड्यूस. यू कैन रिड्यूस इट वंस. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिप्लॉयड से एक बार हैप्लॉयड बनाओगे, 2n से लेकर n बनाओगे. सेकेंड टाइम आप n से n बनाओगे, ना कि n से half. So there are two types of meiosis. One of them is referred to as meiosis 1, which is a reductional division from 2n to n. The second one is called as meiosis 2, which is an equational division, which means n to n. Am I clear, everybody? राइट बालाजी, एक बार सर्च करो, मैंने करवाया है, एनसीईआरटी या कहीं पर मिल जाएगा आपको. So the first one is reductional division 2n to n. The second one is equational division n to n. These are the two types of meiosis. Let us first look at meiosis 1. Meiosis 1 जो है वो after replication of parental chromosomes हो जाता है, right? तो meiosis 1 begins after replication of parental chromosomes to form identical sister chromatids. In S phase 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. बहुत 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 सिंपल है. मैं आपको पहले समझाती हूँ, उसके बाद आप देखना आपको कितने इजीली समझ में आ जाएगा. I will even explain it to you with the help of mind maps. So pay attention. Meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 में 2n to 1n. Meiosis 2 में 1 to 1 equational. Point number 1. Is that clear? Yes, Astuti? OP slides? Now, in meiosis 1 and meiosis 2, number 1, most important thing that you have to remember is the phases will remain the same. There is prophase, there is metaphase, there is anaphase, and there is telophase. Now, before I move forward, everybody who's in the class, just be here for 10 seconds. You will understand everything. I'm doing a new slide and there is blank slide, and just pay attention.
Just pay a lot of attention. You will understand everything. Right? Please pay attention. Now, my dear children, please see. Correct? Imagine this is chromosome number 1. Every chromosome has got 2 pairs. Imagine this is chromosome number 2. Every chromosome has got 2 pairs. How many pairs? Tell me. 2 pairs. One pair of chromosome comes from the father. They are referred to as paternal. Another pair of chromosome comes from the mother. They are referred to as maternal. So paternal, maternal. Therefore, there are 2 pairs. That means, my dear kids, please understand this. 23 are given by mother. That means it is N, and 23 are given by father. This is also N. When you add them, it becomes 2N, which becomes 46. So, 1 has got paternal, maternal. 1, 2 pairs. 2, 2 pairs. 3, 2 pairs. 4, 2 pairs. 5, 2 pairs. 6, 2 pairs. 7, 2 pairs. 23, 2 pairs. Total becomes 46. Point number 1. Clear? Every chromosome occurs in pairs. The pair is chromosome 1, 2 pairs, chromosome 2, 2 pairs, chromosome 3, 2 pairs, chromosome 4, 2 pairs, chromosome 15, 2 pairs, chromosome 20, 2 pairs, chromosome 23, 2 pairs, total become 46. Is that clear? In one pair, this has come from father, this has come from mother. Imagine this is chromosome 1. These are 2 arms of father's chromosome. There are 2 arms of the same chromosome. Each one of them is coming in pairs. Right? These 2 arms of paternal are referred to as sister chromatids. Is that clear? Because they have come from father, they are going to be similar. Done, Isra? These 2 have come from the mother. These 2 are also referred to as sister chromatids. Because mother has given them. Sister chromatids are identical. Is that clear? Mother ne diye dono. Every chromosome has got 2 arms. There are 2 arms to a single chromosome. Those 2 are given by mother, father. They are called as the sister chromatids. ये दोनों फादर ने दिए, ये पेटर्नल के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. ये दोनों मदर ने दिए, ये मदर के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. बड़ी सिंपल सी बात है बेटा. Can father and mother, can these two be similar? The green pen, आप ही बताओ. ये father से आई है और ये mother से आई है. Can these two be similar? That means the genes that you get from your father, Suchi, and the genes which you get from your mother, Humna has answered, can they be similar? How? Devanshi Pitti. These two are called as non-sister chromatids. They are not similar. How can they be similar? They are referred to as the non-sister chromatids. So what are the concepts that we've discussed till now? Concept number 1 that we have discussed. Very important, guys. This is phenomenal. Concept number 1, all of them occur in pairs. Concept number 1, mother ने 23 पेयर दिए, father ने 23 पेयर दिए, टोटल बन गए 46. That means ये father का पेयर हुआ n, ये mother का पेयर हुआ n. तभी तो n और n मिलकर डिप्लॉयड बन रहा है, 2n बन रहा है. Yes or no? Father का पेयर हुआ n, mother का पेयर हुआ n. And come on guys, make sure that you liking, sharing, subscribing. BioTonic मिलके बन गए 2n. Father का पेयर is sister chromatids, mother का पेयर is sister chromatids. आपस में they are non-sister chromatids. Yes or no? Yes, Rahul.
फादर का पेयर इज एन, मदर का पेयर इज एन, एन ऑफ फादर सिस्टर क्रोमैटिड्स, एन ऑफ मदर सिस्टर क्रोमैटिड्स, आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. राइट है, यू आर द चैट सेक्शन राइट नाउ. डन. राइट है. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुल. ये एन है, ये एन है, ये पैटर्नल है, ये मैटरनल है. एन और एन 2n होता है. मियोसिस 1 में आप क्या करते हो? मियोसिस 1 में आप सेपरेट करते हो पेयर्स को. इन पेयर्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं. ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पास 23 पेयर्स है. दैट मींस दिस सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज मियोसिस 1. अब n और n मिलकर बन गए थे 2n, तो मियोसिस 1 में आपने 2n को सेपरेट कर दिया n और n में. इज दैट क्लियर एवरीबडी? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इससे सिंपल नहीं हो सकता, बता दो. मियोसिस 1 में आपने पेयर्स को सेपरेट कर दिया. दोस पेयर्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स. आपके पास 23 into 2 46 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. दैट मींस द ऑर्डर क्रोमोसोम 1 जो है वो हम सब में सेम होगा. अगर मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में आई की जीन है तो शालिनी, नीट, फीवर, नेहा सबके क्रोमोसोम 1 में आई की जीन होगी. पर हो सकता है मेरे क्रोमोसोम 1 में ब्राउन आई की जीन हो, दीपांशी के क्रोमोसोम 1 में ग्रीन आई की जीन हो, अस्तुति के क्रोमोसोम 1 में ब्लैक आई की जीन हो और दीप के क्रोमोसोम 1 में ब्लू कलर की जीन हो. बट जीन आई कलर की होगी. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. मियोसिस 1 मींस यू सेपरेट द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सब में 1 सेपरेट, 2 सेपरेट, 3 सेपरेट, 4 सेपरेट, 5 सेपरेट. दैट मींस 46 का आपने 23 कर दिया. क्लियर? राइट है यू ऑन द चैट सेक्शन. अभी के अभी राइट है. जो बच्चे लेट आए हैं अपनी किस्मत को, फूटी किस्मत पर रोना. पढ़ लो नालायको, यही एग्जाम में आएगा. फिर कुछ गड़बड़ करके आओगे, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, टाइम पे आते नहीं हो. इज दैट क्लियर? बता दो यू ऑन द चैट सेक्शन. अभी के अभी यस. ये लास्ट ईयर है जो मैं पढ़ा रही हूँ, फिर अगले साल पढ़ाऊंगी नहीं. फिर बोलोगे वानी मैम आके पढ़ा दो प्लीज. पढ़ लो. यस और नो? ठीक है. ये था क्रोमोसोम 1. अब मियोसिस 2 में आप सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हो. इज दैट क्लियर? सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये तो सिमिलर है. दे आर डिट्टो, दे आर आइडेंटिकल. तो ये दोनों n और n सेम है. Is that clear everybody? वो n और n सेम है. राइट. नेक्स्ट ईयर आई एम गेटिंग 5 न्यू टीचर्स ऑन बायोटॉनिक और मेरे लेक्चर सिर्फ रिकॉर्डिंग रह जाएगी. 5 नए टीचर आ जाएंगे आप लोगों को पढ़ाने के लिए. डन? इज दैट क्लियर एवरीबडी? नो नो मत करो. 5-6 अच्छे नए नए टीचर लाते हैं. बच्चे बोर हो गए, कह रहे वानी मैम को 2 साल से देख रहे हैं. यस आ जाओ, पढ़ाई करो भी. तुम पढ़ते पढ़ते हो नहीं, फिर क्या फायदा. और बहुत वेदांत तो बहुत काम आ रहा है बेटा, और बहुत टाइप का काम आ रहा है. अब मैं 5-6 अच्छे टीचर लेकर आती हूँ. दीदी भैया से पढ़ना. फिर मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ. चलो आ जाओ, लास्ट टाइम पढ़ा रही हूँ ये. चलो. नो 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 मत करो तुम. नो 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 नो. ठीक है आ जाओ. तो अभी 2 तरह के मियोसिस हो रहे हैं. सिस्टर क्रोमैटिड्स डिट्टो है, सिस्टर क्रोमैटिड्स आइडेंटिकल है, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेम है. n और n है वो सेम की कॉपी है. जैसे एक क्रोमोसोम होता है ऐसा, एक क्रोमोसोम होता है उसी की कॉपी है एक और, उसी की एक और कॉपी. समझ आया कि नहीं आया? यस. सो आई रिपीट अगेन. हमारी बॉडी में हर एक क्रोमोसोम के पेयर है. एक मदर से आता है, एक फादर से. जो फादर से आता है पैटर्नल, जो मदर से आता है मैटरनल. राइट. सिस्टर क्रोमैटिड्स आइडेंटिकल होते हैं, डिट्टो होते हैं. और हर एक के 2-2 पेयर्स होते हैं. पैटर्नल मैटर, क्रोमोसोम 1 पैटर्नल मैटरनल, क्रोमोसोम 2 पैटर्नल मैटरनल, क्रोमोसोम 3 पैटर्नल मैटरनल, क्रोमोसोम 4 पैटर्नल मैटरनल, क्रोमोसोम 5 पैटर्नल मैटरनल, क्रोमोसोम 6 पैटर्नल मैटरनल, क्रोमोसोम 23 पैटर्नल मैटरनल. 23 into 2 46 पेयर्स.
मियोसिस 1 में आपको जो पेयर्स हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो सारे आपके पेयर में हैं, 23 पेयर्स हैं, उनको सेपरेट कर दोगे, क्योंकि 23 अगर पेयर में है ऐसे, तभी तो n और n 46 हुआ, क्योंकि एवरीथिंग इज इन पेयर। तो आप पेयर्स को सेपरेट कर दो। ये हो गया आपका मियोसिस 1। जो एक पेयर है, इट इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। जब आप सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करोगे, विच आर आइडेंटिकल, दे आर सेम, it is n only, right everybody? अरे वाह पीयूष, that is referred to as meiosis 2। meiosis 2, meiosis 2 क्या है? sister chromatids को separate करना। so did you understand? meiosis 1 is separation of homologous chromosomes, meiosis 2 is separation of sister chromatids which are similar. I repeat, is there any doubt? Is there any doubt, my dear children? What is meiosis 1? Is meiosis 1 separation of sister chromatids? No. Meiosis 1 is separation of homologous chromosomes. Meiosis 1 is separation of the pairs. That is why 2n to n. But what is meiosis 2? Meiosis 2 is the separation of the sister chromatids. Meiosis 2 is separation of the sister chromatids. Both of them will happen as prophase, metaphase, anaphase, telophase. Is that clear? ये देखो कितना बेहतरीन डायग्राम है। अब अच्छे डायग्राम दिखाते हैं। दिख रहा है? पेयर्स आपको, ये देखो पेयर जा रहे हैं मियोसिस 1 में, पेयर ब्लू इधर चला गया, पर इधर, पर मियोसिस 2 देखो, 2 फाइनली देखो आ गया बीच में। अब जब सेपरेट होगा, कैन यू सी इंडिविजुअल, सिंगल सिंगल जा रहा है, सिंगल सिंगल, व्हाट अ ब्यूटीफुल जिफ बेटा, सिंगल सिंगल जा रहा है। देखो एक एक जा रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्लाइड, एक एक जा रहा है, एक एक आर्म। ये देखो यहां दो आर्म सेपरेट होंगी, दो आर्म्स, देखो दो आर्म्स है, दो आर्म्स, टू आर्म्स, क्योंकि पेयर सेपरेट हुआ, पेयर सेपरेट हुआ। और यहां पे क्या है? एक एक आर्म, सिंगल आर्म, पेयर टूट गया, सिंगल आर्म सेपरेट हो गई। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? बाकी सब माइटोसिस जैसा है। इज दैट क्लियर? पीयूष सपने में आई थी मैं, वो दैट्स सो स्वीट। यस, डन। एक चीज मैं आपको करवाऊंगी टुमारो व्हेन आई टेक द टेस्ट, मैं स्पेशली आज आपको एक होमवर्क भी दूंगी। होमवर्क में आपको ये, इसके ऊपर मैं स्पेशली क्विज दूंगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इसके ऊपर मैं स्पेशली क्विज दूंगी। चलो पढ़ाऊं अभी। सो मियोसिस 1 पढ़े भाई। मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 2 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पेयर कब सेपरेट होते हैं सुरेश? पेयर कब सेपरेट होते हैं? मियोसिस 1 में। सिस्टर क्रोमैटिड्स कब सेपरेट होते हैं? मियोसिस 2 में। पेयर कब सेपरेट होते हैं? देख लो पेयर्स, इधर सिंगल आर्म, एक एक आर्म जा रही है, देखो एक एक आर्म जा रही है, एक एक आर्म, सिंगल आर्म जा रही है, सिंगल आर्म, देख लो डायग्राम, सिंगल आर्म। इधर क्या जा रहे हैं? पेयर सेपरेट हो रहे हैं। इधर क्या हो रही है? क्रोमैटिड, सिंगल आर्म जा रही है, सिंगल आर्म, देख लो ना प्लीज, क्योंकि क्रोमैटिड सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। यस और नो? यस और नो? बड़े आगे चलो। सो मियोसिस का प्रोफेज 1 के 5 फेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। हाउ मेनी फेजेस आर देयर? टेल मी रौनक, अर्चिता। 5 फेजेस। क्रोमैटिन फाइबर जो है वो क्रोमोसोम की शेप लेने लगते हैं, न्यूक्लियस डिसअपियर होने लगेगा, इनलार्ज होगा, क्रोमैटिन फाइबर एकदम कॉइल होके लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम बनने लगेंगे। So in which stage of prophase will the nuclear membrane start to disappear, nucleus will enlarge, chromatin will become chromosome? In which phase? Leptoteen, right? लता जरा पानी दे दो, लेप्टोटीन। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पेयर करेंगे, पेयर क्यों करेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है एक पैटर्नल एक मैटरनल जो पेयर बनाएगा। अब ये पेयर क्यों बनाएंगे? साइनेप्सिस क्यों करेंगे?
होंगे, इधर से ज्वाइन क्यों होंगे? क्रॉसिंग ओवर के लिए। क्रॉसिंग ओवर मैंने कब पढ़ाया था? फर्स्ट, कोई पेरेंट का कैरेक्टर, कोई मदर का कैरेक्टर बताया था। For recombination, for crossing over. So each pair of homologous chromosome is the one. We have 23 pairs of homologous chromosome, and can you see the synaptonemal complex that they are going to form? Yes, for crossing over, because you will have a mixture of genes, some from father. First diagram में देखा था कि दो चीजें reduction समझाया था और बताया था that mixing हो गई. So leptotene में chromosomes form होंगे because chromatin fiber condense होंगे. Pairing of homologous chromosomes zygote में होगी. पैकीटीन वो चार चार के बंडल बना देंगे, टेट्राड. देख लो चार ये पेयर, 4 of them are there. बाइवैलेंट्स भी कहते हैं इसे, बाइवैलेंट्स. बाइवैलेंट्स दो के बंडल, टोटल 4 हो गए. कैन यू सी दिस? 1 2 3 4. और क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन. क्रॉसिंग ओवर अकर्स. There is recombination of genetic material on the homologous chromosome. 1 के दोनों पेयर है. Can chromosome number 1 do recombination with chromosome number 3? No. क्रोमोसोम 1 में I की जीन होगी, हम सब में. That is why here species. It is homologous chromosome. वो क्या करेगा? क्रॉसिंग ओवर करेगा. क्रॉसिंग ओवर करने के बाद बाइवैलेंट क्या करेंगे? सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. हर जगह से सेपरेट होने लग जाएंगे एक्सेप्ट जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था. काइज़मेटा. काइज़मेटा पे अभी भी चिपके रहेंगे. टर्मिनलाइजेशन होगा, then they will separate. So they will start separating in every other place except the point where it is attached, where crossing over has happened. That point where it attached and crossing over happened is called chiasmata. It will require terminalization. Synaptonemal complex is formed for doing crossing over. Is that clear? And finally, terminalization. MCQ. So ऐसे मूव करेगा, पूरा फट जाएगा एंड तक. इट विल मूव. राइट? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप इज गोइंग टू डिसअपियर. So meiosis का prophase 1 is one of the longest phases. It consists of 5 phases. लता जरा पानी दे दो. लता stands for leptotene. Leptotene chromatin fibers become chromosomes, long and slender. Number 2 is zygotene. Zygotene is ZP. Where pairing of homologous chromosomes takes place, they pair up. The pairing of homologous chromosomes is called as synapses. Then you come to pakitene. Pakitene is a stage where crossing over occurs, recombination occurs. It only occurs in homologous chromosomes. Diplotene, the bivalents separate except at the point of chiasmata formation. Chiasmata is the place where they do not separate. They will finally separate in lata zara pani de do, the last stage, which is called terminalization. And nucleolus and nuclear envelope will disappear. That is it. इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. Any doubts? Any doubts? हो गया? This is meiosis 1. Leptotene, zygotene, देखो synaptonemal complex दिख रहा है. Pakitene, crossing over, ये पूरे का पूरा बन गया. Right? Chiasma formation, हर जगह से separate हो गया except chiasma. Terminalization हो गया. It is going to separate. Metaphase. Metaphase पे कहाँ आके attach हो जाएंगे? Metaphase plate बन जाएगा. और सेपरेशन, किसका सेपरेशन होगा? बताओ. 4 बार बताए. नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर. किसका सेपरेशन होगा? टेक बर्निंग. बता दो. पेयर्स 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 पेयर्स. इक्वेटर पे आ गए. सेंट्रियोल है बिकॉज एनिमल सेल है, और सेंट्रियोल्स को स्पिंडल फाइबर मूव करेंगे एंड अटैच टू द क्रोमोसोम. और पेयर, ईच पेयर विल स्प्लिट. दैट मीन्स 2n से n बनेगा. योर नो ऑन द चैट सेक्शन. कल इसका टेस्ट है. क्लियर हो? राइट? पेयर सेंट्रियोल है, एनिमल सेल है, सेंट्रियोल है, पुल करेंगे. पेयर को पुल अपार्ट कर दिया एनाफेज में. यस. अब मियोसिस 1 में सिस्टर क्रोमैटिड स्टे टुगेदर करते हैं. सिस्टर क्रोमैटिड स्टे टुगेदर. ये सिस्टर क्रोमैटिड कब सेपरेट होंगे? पेयर सेपरेट हो गया. पेयर पुल्ड अपार्ट. पेयर को आपने सेपरेट कर दिया. पेयर पुल अपार्ट कर दिया. एक एक पेयर पोल पे चला गया. आपको कल बताया है मैंने एनाफेज में क्या होता है. बट सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कब मूव करेंगे? मियोसिस
इक्वेशनल डिवीजन। डन? कुछ नहीं होगा इक्वेशनल डिवीजन में, सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव करेंगे। नाउ एट ईच पोल फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, पूरा n आ गया ऑपोजिट पोल में। डन? टू सेपरेट सिंगल सेल पिंच हो जाएगा, पिंच कल बताया था मैंने, फरो डॉटर सेल बन जाएंगे एंड n, फिर सेल डिवीजन हो जाएगा साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। ये देख रहे हो पेयर सेपरेट हो गया। और कैन यू सी ना कलर डिफरेंस, पर्पल के पास थोड़ा ब्लू है, ब्लू के पास थोड़ा पर्पल है, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। मियोसिस 2 ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है? सिंपल। यहां पे आपको क्रॉसिंग ओवर वगैरह कुछ नहीं करना, दे आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस में होगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी प्रोफेज 2 में, फिर वो आएंगे ऑपोजिट पोल्स पे, इक्वेटर पे लगेंगे, ऑपोजिट पोल्स पे जाएंगे। काइनेटोकोर्स जो मैंने आपको कल समझाया था कि क्रोमोसोम के ऊपर ये हुक लगा होता है जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे उनको सेपरेट करने के लिए, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने के लिए। मेटाफेज पे अटैच होंगे, उसके बाद एनाफेज में स्प्लिट होंगे। कैन यू सी इंडिविजुअल? व्हाट अ ब्यूटीफुल स्लाइड। टीलोफेज में आपके 4 सेल बनके तैयार हो गए। व्हाट अ लवली स्लाइड। देखो मैं और डार्क कर रही हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से नजर आए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ? वाओ स्लाइड है, वाओ। जिफ देख लो बस, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट लुक एट द जिफ। कैन यू सी दिस एवरीबॉडी? I'll switch on the light so that you can really see. Can you see? Done? See? Individual. Yes? What a lovely slide. और यहां पे क्या सेपरेट हो रहा है? देखो क्या सेपरेट हो रहा है यहां, देखो खुद ही बताओ। पेयर्स, रिकॉम्बिनेशन कर चुके हैं पेयर्स। देखो पेयर्स हैं, देखो दो है, ध्यान से देखो, दो हैं। और मियोसिस 2 में इक्वेटर पे लग गया एक एक पेयर। अब एक एक पेयर है तो सेपरेट कौन होगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं होगा? यहां पे पेयर सेपरेट हो रहे हैं मियोसिस 1 में, प्लीज कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे पेयर्स देखो सेपरेट हो गए, दो पेयर्स हैं, देखो कितने प्यार से जाके पेयर सेपरेट हो गए, देखो। यस, पेयर सेपरेट हो गए मियोसिस 1 में। और यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, मेटाफेज पे अटैच हुए, एनाफेज में सेपरेट हो गए, टीलोफेज में जाकर सेल बन गया। सेल फरो देखो लास्ट वाले जिफ में सेल फरो बन रहा है, दिख रहा है? सेल फरो बन रहा है लास्ट वाले जिफ में। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स आस्क मी। डन? कोई भी डाउट है प्लीज पूछो, बोलो मैम समझ में नहीं आया, ये समझाओ। समझ आ गया? भूलोगे तो नहीं? दिस मेड मी फॉल इन लव विद बायो। थैंक्स यार दीप। दिस इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? अरे जब तक नंबर रिड्यूस नहीं करोगे, n+n रिड्यूस नहीं करोगे, 2n से n नहीं बनाओगे, n और n से 2n नहीं बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, वेरिएशन आएंगे। n और n बनेगा तो लेटर ऑन n और n जाकर डिप्लॉयड नंबर को एस्टैब्लिश करेगा, क्रॉसिंग ओवर से नई कॉम्बिनेशंस बनेंगी, राइट? अगर क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन कहां से आएंगी, नई जीन्स कहां से आएंगी, डिप्लॉयड नंबर को रिस्टोर कैसे करेंगे? n+n कांस्टेंट नंबर ऑफ, अदरवाइज पे हम 2n + 2n करके 4n हो जाते, 4n + 4n करके 8n हो जाते, 8n + 8n करके 16n हो जाते। तो एवरी टाइम रिडक्शन होता है ताकि कांस्टेंट नंबर मेंटेन हो सके। हर बार ह्यूमंस रिडक्शन करते हैं n और n ही कंबाइन करके 2n बनता है। गैमीट्स जो है वो n होते हैं, फिर उनकी वजह से कांस्टेंट नंबर मेंटेन होता है, ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड होते हैं, और गैमीट्स बनाने के लिए हमेशा हमें क्रॉसिंग ओवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। सिंपल। देयर आर 23 पेयर्स हुमना एंड 46 क्रोमोसोम। 46 पेयर होगा तो फिर तो डबल हो जाएगा ना, 92 हो जाएगा, है ना अस्मी? कितने बच्चों को समझ आ गया? यस। सो अगर कोई पूछे होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब सेपरेट होते हैं? मियोसिस 1। अगर कोई पूछे सिस्टर क्रोमैटिड्स कब सेपरेट होते हैं? मियोसिस 2। चैप्टर खत्म।
और स्पिंडल फाइबर्स की प्रोडक्शन को रोकता है कॉल्चिसिन, इट इज अ माइटोटिक पॉइजन। एंडोपॉलीप्लॉइडी करवाता है। स्पिंडल फाइबर नहीं होंगे, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ठीक है, कल एक टेस्ट रख लें। थैंक्स पटेल पलक, कल एक टेस्ट रख लें, 40 questions or 30 questions from this chapter. Done? Yes. And guys, please make sure, especially जो बच्चे NEET 2022 दे रहे हैं, go get the crash course, guys. It is very important to get the crash course. ठीक है? Take care. Bye bye. See you sharp at 9. ऐसे ही फटाफट से microbes वाला चैप्टर भी हम खत्म कर देंगे. Bye guys. Where will you go? And sit and study something, Astuti. Bye. Bye guys.